Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Plant Ecology and Phytogeography. Plant Ecology and Phytogeography रो हमें last class रे किछटा question माने discussion करथना जेंटे के previous year रे आसीथिला. And आज आउ भी किछटा question discussion करमा. So then let's start our discussion today. तो हमर किछटा question discussion करिथिला आज आउ किछटा नवा question discussion करमा. देखो the first question for the today's discussion आज रो discussion लगी पहला question होचे that is the adaptation of plants against the wind. देखो wind आमे जितले देखुछु wind के आमे केन हिसाब consider करूछु it is a ecological factor. Wind or this is your air under रे जीवा. ओके तो एकता के हमें कहार अंडर रे कंसीडर करछु इकोलॉजिकल फैक्टर अंडर रे कंसीडर करछु बिकॉज़ इकोलॉजिकल फैक्टर कहा के कहसु जेनसे भी फैक्टर प्लांट रो ग्रो करबार लगी किछि इफेक्ट पहुंचौ छे ताके कहसु हमें काम बोली के इकोलॉजिकल फैक्टर ओके नै तो विंड अगेंस्ट रे प्लांट के जदी ग्रो करबार अछि तो से जगह रे प्लांट केन टाइप रो एडाप्टेशन शो करू एडाप्टेशन माने कण एडजस्टमेंट राइट जदि केनसे भी जगह स्ट्रांग विंड अच्छे जदि अधिका स्पीड रे पवन बहुची तो से केस रे प्लांट्स के काना करबार के पड़बा पहला तो एडाप्टेशन जते बेले देखमा फास्ट हमको प्लांट्स के काना हबार के पड़बा द प्लांट्स शुड हैव प्लांट्स के काना हबार के पड़बा प्लांट्स शुड बी स्ट्रांग प्लांट्स शुड बी स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल हबार दरकार है ओके स्ट्रांग रहबार जरूरी है जेतु स्ट्रांग विंड अधिका स्पीड रे जति विंड आसुची एंड प्लांट जति स्ट्रांग नै न बले भांगी जीवा राइट तार संगे संगे से काना हबार कथा फ्लेक्सिबल माने काना सपोज धरि न इटा गुटा हमर पाखा प्लांट अछि एंड यारु विंड जते बेले आसुची प्लांट ऊपर जते बेले विंड बहुत स्पीड रे आसुची प्लांट काने करि परला जति प्लांट काना करि परला फ्लेक्सिबिलिटी शो कला तो स्ट्रांग विंड्स आसबार द्वारा प्लांट काना करि पारुछ बेंड करि पारुछ ताकि कोछु फ्लेक्सिबल बोले करि कहू राइट तो प्लांट काना बर कथा स्ट्रांग हबार कथा एंड फ्लेक्सिबल हबार कथा जति फ्लेक्सिबल नाही न तो काना हबा भांगी जीवा ब्रेक करि जीवार चांसेस अछि राइट गुटे हमर कंडीशन नला दुई नंबर कंडीशन दे शुड बी ग्रो नियर द ग्राउंड माने जिन प्लांट्स माने अधिका हाई स्पीड विंड एरिया रे देखबार के मिलसन से माने काना करसन दे ग्रो close to the ground ये प्लांट्स माने ग्राउंड लेवल रो पाखा पाखी रीजन रे ग्रो करसन का हेले जे ग्राउंड लेवल रे पाखा पाखी ग्रो करबे बिकॉज़ हमें जतेले स्ट्रांग विंड कथा पकैछु जतेले पवन स्पीड रे जाउछ पवन रो अधिका इफेक्ट ऊपर रहसी तले हेतकी स्पीड रे पवन ता मूव नाही करे तो जतेले हाईएस्ट और स्ट्रांग विंड जतेले देखुछन दे आर मोर इन द अपर साइड जदि हम प्लांट्स ता ग्राउंड लेवल रे ग्रो कला तले ग्रो कला छोट छोट प्लांट जदि ग्रो कले बेले से जगह रे हतकी इफेक्ट नाही पड़े विंड रो सो दैट प्लांट्स माने काना करबे से जगह रे बेसी हाइट ग्रो नै करन से माने तले तले ग्रो करबे बुझि पल्ला सो तो इनो काना होचे प्लांट्स जनरली ग्रो plants in this region generally grow near the soil surface near the soil level because the strong winds are generally found on higher level strong wind ता जनरली हमर हायर लेवल रे देखबार के मिलस सेतिर लगी बलिकरी प्लांट्स माने इनो काना करि पारबे समान बेसी हाइट ग्रो नै करन तले तले ओके इटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर छला पहला देखलना स्ट्रांग रहबार कथा फ्लेक्सिबल रहबार कथा एंड फ्लेक्सिबल रहबार लगी प्लांट के गोटे सब्सटेंस हेल्प करसी सब पहले मन रखितबे नो क्वेश्चन आसी देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ पैक्टिन काना थिबार कथा पैक्टिन गोटे सब्सटेंस गोटे कार्बोहाइड्रेट पैक्टिन जिन जगह रे अधिका थिबा से जगहटा अधिका फ्लेक्सिबल हे पारो
ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା ୟଙ୍ଗ ଥିସି ଦେଖବ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିबल ସେ ରବର ଭଳି ଅଛି बिकॉज से जगह रे बहुत अमाउंट रो काना थसे पैक्टिन्स डिपोजिशन है राइट एटा गला गुटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गुटे गला ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हला स्मॉल एंड थिन लीव्स आ गुटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हला स्मॉल एंड थिन लीव्स ओके another characteristics हला जे the plant should have small and thin leaves पतला आउ छुआ छुआ लिप्स थिबा बेले काना हबा जदि बड़ बड़ ब्रॉड साइज रो जदि लिप्स थिबा ब्रॉड साइज रो जदि लिप्स थिबा काना हबा सेते बेले ब्रॉड साइज रो लिप अछि सपोज इटा हमर प्लांट है प्लांट रे जदि हमर लिप्स माने बहुत मोटा मोटा अछि ब्रॉड हेगिरि अछन बेले से केस रे काना हबा जते बेले हमर पवन आसला टाइम रे हमर चांसेस अछि कहा के ब्रेक कर देबे ताके ब्रेक कर दे फटी जीवा लिप्स टा राइट बट जदि पतला लिप्स अछि जदि हमें गुटे प्लांट्स देखला सेतार केस रे बहुत पतला लिप्स अछि इटा मनकर प्लांट्स हला एंड इनो मनकर हमर लिप्स माने जे देखला बहुत पतला पतला लिप्स अछि तो इजीली ई पतला पतला लिप्स रे काना हबा आराम से हमर विंड टा पास करि जे okay so that broad leaf nathically they should have small and thin leaves are present are found in these plants to avoid breaking of their leaves ताकर leaves टा break नहीं करू सेथर लगी समानकर नो काना डेवलप करिसन पतला पतला leaves thin leaves छोट छोट leaves डेवलप करिसन okay another characteristic feature that the deep roots should be present आउ काना रहबार कथा deep root माने काना देखो गोटे प्लांट रे रूट जदी बेसी तलके जाइछि सेतकी तलके जाइतबा सेतकी प्लांट ता स्टैंड हेकरी रही परबा जदी भी तुमको हाई विंड होचे बेले भी काना हबा देखो हाई विंड जते बेले आसुची से टाइम रे प्लांट ता उफड़ी करी बाहरी जबार चांसेस बट उफड़ी करी केते बेले बाहरबा जदी तार रूट ता हेतकी स्ट्रांग नाइतबा बेसी भीतर के नाइ जिति जदि रूट टा बहुत भीतर के जाइथिबा माने डीप रूट जदि थिबा बेले जतकी भी पवन आसु प्लांट्स टा काना ही परबा विथस्टैंड हिकरी रही परबा so that there should be presence of what they should have deep root system okay तो इमानकर केस रे काना होचे जे रूट टा हमर काना करसे रूट्स helps in anchorage of the plants on the soil surface रे एनकरेज करबार लागि हेल्प करू एनकरेज माने सीधा ठिया होय करी रहबार लागि हेल्प करू राइट तो हमर जदी डीप रूट थिबा बेले काना हबा बेसी जते मूवमेंट हेले भी उपड़ी करी नहीं बाहरी okay so that it can stand against the high wind so that it can stand against so that it can stand against the high wind high wind against रे से कान ही परबा स्टैंड हेगु रही ओके एंड another characteristic feature ताकर लीव्स रा जदी सरफेस देखबा टिके मोटा काहेले जे ताकर आउटर कवरिंग रे गुटे वैक्सी कोटिंग थिसे क्यूटिकल जनरली प्रेजेंट राइट तो काना हबा जते बेले बहुत स्ट्रांग विंड जाउचे जो पवन जदी जाउचे बेले सेनो हमर काना बर चांसेस छै लीफ रो आउटर सरफेस ता ड्राई हे जबार चांसेस छै लीफ टा सुखी जबार चांसेस छै बट जदी बाहर रे काना रहला क्यूटिन रहला तो क्यूटिन टा काना करबा बाहर कंडीशन रु प्लांट रो भीतर कंडीशन के काना करबा प्रोटेक्शन देबा so that taकर जन लीव्स माने जे देखमा समनकर लीव्स माने केनता तिसन they should have thick cuticles presence of thick waxy coating on their leaves protect them from
ड्राइंग आउट ड्यू टू विंड विंड रो लगी बाहर साइड रे जेहेतु अधिक विंड होचे सुखी जिबार चांसेस होचे तो सुखी जिबार नु के पहुंचाबा वॉक्सी कोटिंग वॉक्स भलिया कोटिंग ओके वॉक्सी कोटिंग मोहम भलिया कोटिंग थिबा वॉक्सी कोटिंग रे मोस्टली हमर थेसी क्यूटिकल मन रखिथिबो जे कि सहजे भितरु बाहर के वाटर के बाहर करे नहीं दिए बिकॉज दैट इज अ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस दैट इज अ वाटर हेटिंग बुझियला तो इटा गला हमर काना दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट द winds winds are against the plants केन टाइप रो एडाप्टेशन शो करू राइट तापर असला नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर हाइड्रोलॉजिक साइकिल जल चक्र बोली कि छोड़ दिना पड़ी क्रिया व्हाट इज दैट हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखो हाइड्रोलॉजिक साइकिल रो माने कन गोटे प्रोसेस जेन प्रोसेस रे अर्थ सरफेस रो वाटर टा ऊपर के ट्रांसपोर्ट होचे केन के एटमॉस्फेयर निके राइट वाटर टा लिथोस्फीयर रु वाटर टा केन के जाउचे एटमॉस्फेयर निके एंड एटमॉस्फेयर रु फिर केन के रिटर्न बैक करछे अर्थ सरफेस के रिटर्न बैक करछे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोली कि गोटे साइक्लिक वे रे कंटिन्यूअसली वाटर टा काना करूचे वाटर दैट मूव टू द एटमॉस्फेयर and again from the atmosphere water return back to the earth surface that is called as what hydrologic cycle okay so what is hydrologic cycle let me write here hydrologic cycle ro mane hala it is a continuous cyclic process by which water move to the atmosphere and again return back to the okay water move to the atmosphere move to the atmosphere from kenu from the surface likh deba na from earth surface okay and again return back to the earth surface okay ita amar hala suppose this one that is your earth surface re amar hala this one that is your water अछि but due to high sunlight water ro काना होची हीटिंग होचे वाटर जते बेले वाटर रो जते बेले हीटिंग हला वाटर टा काना कला इवापोरेट हेकरी ऊपर के गला ओके ऊपर एटमॉस्फेयर के जते बेले गला इवापोरेट हेकरी वाटर वेपर हिसाब से गला वाटर वेपर हिसाब वाटर इवापोरेट हेकरी गला ओके गला पर एटमॉस्फेयर रो ऊपर के गला पर सेनो कान हला एटमॉस्फेयर रो ऊपर वाटर टा कंडेंसेशन माने कान ते जगह रे जेहेतु एटमॉस्फेयर रो ऊपर अड़के जी देखमा अपर साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव लो टेंपरेचर तो लो टेंपरेचर रे काना हबा वेपर टा यदि वेपर के हम ठंडा करमा वाटर वेपर के ठंडा कले काना हबा फिर पानी ड्रॉपलेट्स माने फॉर्मेशन हबा ओके नहीं तो इनके गला पर वाटर ड्रॉपलेट्स माने फॉर्मेशन हला एंड से वाटर ड्रॉपलेट्स माने गैदर करी करी काना फॉर्मेशन कले क्लाउड फॉर्मेशन काना फॉर्मेशन कले क्लाउड फॉर्मेशन कले प्रोसेस को कंडेंसेशन देन क्लाउड रे जते बेले बहुत सारा वाटर वेपर जाई करे जमा ही गला परे बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स रो काना बा जगह रे क्लाउड टा हेवी ही जिबा बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट जते बेले फॉर्मेशन हबा क्लाउड टा काना हे जिबा उजनिया हे जिबा क्लाउड टा काना हे जिबा हेवी ही जिबा एंड क्लाउड जते बेले हेवी ही जिबा फिर से काना करबा हेवी हला परे वाटर टा काना करबा रिटर्न बैक करि जिबा केनके टू द अर्थ सरफेस ओके केन हिसाब रिटर्न बैक करि पारे आइदर रेन वाटर हिसाब रिटर्न बैक करि पारे स्नोफॉल हिसाब रिटर्न करि पारे हेल्थ हिसाब रिटर्न बैक करि पारे झड़ तूफान हला या फिर तुमर पानी बरसिला या फिर स्नो हला डिफरेंट कंडीशन केन टेंपरेचर अछि हमर एनवायरनमेंट रे सेता के बेस करि जेतेले शीत मास अछि बहुत टेंपरेचर हमर कम अछि
से टाइम रे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाइए एंड क्लाउड टा हेवी हो जाइए बट से टाइम रे जेतेले एटमॉस्फेयर रु हमर लोअर एटमॉस्फेयर निके और आर सरफेस निके वाटर रहउचे इनो भी जदी एनवायरनमेंट देखमा विंटर सीजन रे से जगह रे भी हमर एनवायरनमेंट टेंपरेचर काना होचे कम होचे तो स्थितिर लगे से टाइम रे जेतेले वाटर टा बरसीबा जेतेले रेनफॉल हबा रेन रेन वाटर हिसाब से रिटर्न बैक ना करे केन हिसाब रिटर्न बैक करबा स्नोफॉल हिसाब रिटर्न बैक करि पारे बुझियला तो एनीवे स्नोफॉल हला हेल्स हला कि रेन वाटर हला जहां भी आस्तु ताके कहसो हम प्रेसिपिट काना कहसो हम ताके प्रेसिपिटेशन बोली करी तो प्रेसिपिटेशन हिसाब से काना कला रिटर्न बैक कला राइट फिर वाटर पले आसला वाटर बॉडी निके फिर वाटर काना हबा इवापोरेट हबा फिर रिटर्न बैक करबा दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल के हमें तीनटा स्टेप रे डिवाइड करू हाइड्रोलॉजिक साइकिल दैट इज डिवाइडेड टू थ्री स्टेप is divided into three steps केतरा स्टेप रे हमें डिवाइड करू तीनटा स्टेप तो फर्स्ट स्टेप के कहू हमें इवापोरेशन फर्स्ट स्टेप के कहला हमें इवापोरेशन दुई नंबर टक के कहला हमें काम बोली करी दैट इज कॉल्ड एज योर कंडेंसेशन तीन नंबर टक के कहू हमें काम बोली करी दैट इज योर प्रेसिपिटेशन ओके तो फर्स्ट हला हमर इवापोरेशन रो माने का ड्यू टू heavy sunlight due to sunlight or sun रो जेन हमर हीट आसु छे सन रो जेन टेंपरेचर आसु छे ड्यू टू दैट हीट वाटर रो काना होचे हीटिंग होचे ड्यू टू दैट हीटिंग ऑफ द वाटर कैन वाटर दैट इज योर ओशन रो वाटर हला लेक रो वाटर हला रिवर रो वाटर हला पॉन्ड वाटर हला दे इवापोरेट एज द वाटर ओके ड्यू टू हाई टेंपरेचर of solar radiation the water from the pond from the water bodies from the water bodies like pond rivers lake ocean etc evaporate as water vapor केन हिसाब इवापोरेट होचे वाटर वेपर हिसाब इवापोरेट ओके ई प्रोसेस के पहला में काम करी and due to that evaporation water vapor केनन के move करमा now water vapor is moving towards the upper atmosphere now water vapor is moving towards the upper atmosphere अपर एटमॉस्फेयर निके वाटर वेपर काना करूचे मूव करते जाए ओके गला केन के पहुंचला अपर एटमॉस्फेयर के सेनु हेबा हमर काना कंडेंस जगह हमर काना हेबा कंडेंसेशन कंडेंसेशन माने काना लिखि दो नेक्स्ट हमर के जोर कंडेंसेशन तीन नंबर स्टेप हला कंडेंस कंडेंसेशन रो माने काना जे वाटर वेपर इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट बिकम कूल डाउन in the upper atmosphere
the water vapor the water vapor cool down and form water droplets. Water droplets. Okay, and these water droplets are aggregate माने जमा हबाटा are aggregated to form cloud. Okay, water droplets माने aggregate माने कड़ा जमा ही गले सब water vapors माने water droplets माने and they make the clouds. Okay, तापरे आसला हमर काने एटा के कहला हम कंडेंसेशन बोली करी कहला 3 नंबर स्टेप हला हमर केनटा दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रो माने का जमर जेतेबेले क्लाउड बिकम हेवियर due to more water vapors. When the cloud become heavy, the water droplets that return back to the atmosphere can be formed as a pare. Let's see. When the cloud become heavier, the cloud become heavier due to more water droplets. Due to more water droplets, it return back to the earth surface in the form of rainfall or snowfall or hail जाके मैं कोरा बोली करी कहू छु एटसेट्रा. ओके, तो डिफरेंट फॉर्म रे वाटर रिटर्न बैक करि पारे. तो केन फॉर्म रे आसबा दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टेंपरेचर दैट इज इन दैट एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट रे केन टाइप रो टेंपरेचर আছে সেটা के बेस करी. कम टेंपरेचर আছে आइदर स्नोफॉल होई पारे या फिर हेल्स आसी पारे. राइट, अधिका टेंपरेचर আছে देन इट विल रिटर्न बैक एज बुझी पारला. एटा गला हमर काना दैट इज योर हाइड्रोलॉजिक साइकिल. बुझी हितबा आराम से लिखि परमा. एटा स्वादिनो जानि छु तो जस्ट टिके एक्सप्लेन करी करी लिखवार थला. दैट्स व्हाई आई हैव. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर केंटा दैट इज योर फूड वेव. नेक्स्ट हला हमर काना दैट इज योर फूड वेव. फूड वेव हमें कहा के कहू. ओके, ओडिया रे पढिदबो खाद्य जालक बोली करी कहू. फूड वेव्स माने हला जे हमर जेतेबेले फूड चेन देखु छु the some of the food chain are interconnected or interlinked. Okay, when the food chains are interconnected, when some food chains are and some food chains are interconnected, they make a network of food chain, a network of food chain called food wave. ताके कहू हम काम लिखरी फूड. ओके, कारण कहला जे जेतेबेले हमर किछिटा फूड चेन भितरे इंटरकनेक्शन हे जबा दैट इंटरकनेक्टिंग फूड चेन विल गिव राइज टू फूड वेव. इंटरकनेक्टिंग फूड चेन विल गिव राइज टू फूड वेव. एक्चुअली कहाला जे इंटरकनेक्शन हवा फूड चेन भितरे तार लागि मी गोटे कांसेप्ट कहू देखो जे हमर केनसी भी ऑर्गेनिज्म एंता नाइ न जे कि सिंगल फूड चेन रो पार्ट हेतिबा. There is no certain organism they cannot be the part of the single food chain. That organism may be the part of the several food chain. Okay, so काना कहूचे देखो a single organism cannot be
द पार्ट ऑफ सिंगल फूड चेन, सिंगल फूड चेन गोटे ऑर्गेनिज्म टा गोटे सिंगल फूड चेन रो पार्ट नाइस, दैट ऑर्गेनिज्म मे बी द पार्ट ऑफ सेवरल फूड चेन, दैट ऑर्गेनिज्म, that organism may be the part of, may be the part of several food chain, several food chain, and make a food web, and काना तैयारी करबा food web तैयारी करबा। और एग्जांपल नेकर चालू सपोज धरेन हमर पाखे अच्छे प्लांट्स माने अच्छे, हमर पाखे अच्छे प्लांट्स, ओके प्लांट्स ऊपर सपोज प्लांट्स ऊपर डिपेंड कला, सपोज हमर डियर डिपेंड कला, डियर माने हरिण, प्लांट्स ऊपर जितले डियर डिपेंड कला, प्लांट्स ता हला हमर प्रोड्यूसर, डियर ता हला प्राइमरी कंज्यूमर, एंड डियर के मनकर अटैक कला के फॉक्स, एंड फॉक्स के अटैक कला मनकर लायन, ओके तो इटा गुटे हला हमर काना फूड चेन, इते के दे देला हम फूड चेन नंबर 1, इते के दे देला फूड चेन नंबर 1, एक नंबर फूड चेन, ओके another organism ने ना सपोज प्लांट्स ऊपर प्लांट रो प्लांट मटेरियल के खाइला मनकर रेट, ये खाइला रेट खाइला, ओके एंड रेट के मनकर खाइला कैट खाइला, कैट के मनकर खाइला फॉक्स, एंड फॉक्स के खाइला के लायन, तो another फूड चेन क्रिएट हला, ओके आ गुटे फूड चेन जगह रे क्रिएट हला, ताके देला फूड चेन नंबर, ओके आ गुटे फूड चेन जदी हमें देखमा सपोज प्लांट्स मटेरियल के खाइला के रैबिट, ये खाइला रैबिट खाइला मन करे, एंड रैबिट के मनकर खाइला किए दैट इज योर फॉक्स, एंड फॉक्स के खाइला किए लायन, so this is your food chain number 3, idella food chain number 3, so several food chains are interconnected, plants ta food chain number 1 रो भी पार्ट है, food chain 2 food chain 3 सब food chain रो पार्ट हो जे के दैट इज योर प्लांट, यदि हमें फॉक्स देखला फॉक्स होचे फूड चेन नंबर 1 रो भी पार्ट, फूड चेन नंबर 2 रो भी पार्ट है, फूड चेन नंबर 3 रो भी पार्ट है, so there is no chain of food chain रो जे नेटवर्क फॉर्मेशन हला, फूड चेन माने इंटरकनेक्टेड हेले, ये फूड चेन टा गुटे गला, देन दिस फूड चेन कनेक्ट टू द फूड चेन नंबर 1, देन ये फूड चेन भी केनो कनेक्ट हला दुई हमर एक नंबर फूड चेन द्वारा कनेक्शन, चेन और हमर जन फूड चेन माने रहला इंटरकनेक्शन हे गला, ताके कहला में काम करी फूड वेव्स बोली करी, देखो जदी हमर एनवायरनमेंट रे इकोसिस्टम रे जदी फूड चेन खाली थिता, फूड वेव जदी नाइ थिता बहुत प्रॉब्लम हे जाउ, काना प्रॉब्लम हे जाउ था जे केनसी भी ऑर्गेनिज्म जदी गुटे न फूड चेन रो पार्ट है और केनसी भी फूड चेन रो पार्ट जदी नुहे से ले प्रॉब्लम काना हबा, जदी से ऑर्गेनिज्म टा अलगा केनसे फूड चेन रो पार्ट जदी नुहे से प्लस से ऑर्गेनिज्म के तार जन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म असन समानकर ऊपर खाली डिपेंड होबार के पड़बा, जदी से ऑर्गेनिज्म रो नंबर डिक्रीज करी गला और से अलगा कैंसे ऑर्गेनिज्म के खाई नाही पारे तार ऊपर डिपेंडेंट है जदी नाही पारे प्लस से ऑर्गेनिज्म काना हितबा से ऑर्गेनिज्म रे भी डेथ, बट गुटे ऑर्गेनिज्म जदी मल्टीपल फूड चेन रो पार्ट है पहले ई फूड चेन रो जन खाना मिलबार कथा ताको जदी नाही मिलला आ गुटे फूड चेन के भी डिपेंड करी, जेंदा कि जगह रे फॉक्स रो एग्जांपल नो, फॉक्स टा कहा के अटैक करूचे डियर के अटैक करूचे, जदी फॉक्स के डियर मिलला तो ठीक अछि, यदि फूड चेन रे डियर कमी गला, डियर नंबर डिक्रीज करी गला, डियर नाइ न मतलब फॉक्स कैन एंटर इनटू दिस फूड चेन, तो फॉक्स कहा के भी खाई परबा, कैट के भी खाई परबा, और यदि ई फूड चेन रे भी डिपेंडेंट ने पल्ला कैट जदी नाइ न तो फॉक्स कहा के खाई परबा, आगुटे फूड चेन अछि दैट इज योर रैबिट के भी, तो नेचर रे फूड वेब अच्छे बोली करी हमर जन नेचर अछि, हमर जन एनवायरनमेंट अछि, इकोसिस्टम अछि, इकोसिस्टम टा स्टेबल हे करी रही पारछ, तो इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी मेंटेन करौचे किए दैट इज योर फूड, अदरवाइज खाली फूड चेन कांसेप्ट जदी थिता जे नाही मुई फूड चेन रो हेले जेकरी मुई रहिमी बोली जदी कहता बेले से फॉक्स सीता के जदी नाही खायता बोले डियर मरी गले फॉक्स भी मरी जाता, फॉक्स मरी गले लायन भी मरी जाता,
बट नाइ हेंता कंसेप्ट नाइ रो हमर काना अच्छे yes जे amar gote organism can be the part of the multiple number of food chain so that there will be formation of interconnecting food chain and that interconnecting food chain is called as what food webs boli बुझी पारलो काहे के कहउछन food ओके एटा गला हमर काना that is your food web and next हम डिस्कशन करमा another question that is your desert eco next question आस्तला हमर desert eco desert मरुभूमि बोली करी कहू राइट इकोसिस्टम माने कान गोटे जगार रे गोटे सिस्टम जेन जगार रे लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा एंड आउ किछे एबायोटिक सब्सटेंसेस ताके को हमें काम बोली करी इकोसिस्टम बोली करी कम्युनिटी विथ इट्स एबायोटिक कंपोनेंट कम्युनिटी रे डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म संगे तकर एबायोटिक कंपोनेंट माने कान नॉन लिविंग कंपोनेंट के को हमें इकोसिस्टम बोली करी कहू डिजर्ट इकोसिस्टम रे डिजर्ट इकोसिस्टम इता के कहू ecosystem then jagar re ki there will be very shortage of the rainfall throughout the year there will be shortage of rainfall or very little amount of rainfall will be there and very high temperature will be there that region is called as what desert boli kari कहू right so desert रा में जेतले देखमा desert are the dry regions with very little rainfall and very high temperature and very high temperature in daytime in daytime daytime रे very high temperature रहसी but in night time and in night time very low temperature तो इस जगह रे जेन हमर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करसन दिस इज योर एक कंपोनेंट है इस जगह रे जेन लिविंग ऑर्गेनिज्म माने ग्रो करसन most of the living organism most of the living organism which are growing in this region which are growing in this region to tolerate high temperature and dry condition high temperature as well as dry condition के माने काना करि परफर कता टॉलरेट करि पर सेतिर लगी जगह रे हमर किछटा प्लांट्स देखबार के मिलसी फॉर एग्जांपल किछटा प्लांट्स हमें जे देखमा ई जगह रे देखबार के मिलसी हमर केन प्लांट्स दैट इज योर कैक्टस टाइप रो प्लांट्स देखबार के मिलसी कैक्टस देखबार के मिलबा सकुलेंट बोली करी कहि परमा समान को सकुलेंट्स प्लांट ओके सकुलेंट माने काना पंजी टाइप रो लागुतबा समान को जे टच करमा बिकॉज़ तकर भीतर वाटर टा स्टोर हेकरी रहबा समान को संकेन स्टोमाटा देखबार के मिलसे संकेन स्टोमाटा माने स्टोमाटा के भीतर के ढुकी करी थिबा पूरी करी थिबा संकेन स्टोमाटा बोली करी कहसु स्टोमाटा जदी बाहर के जदी एक्सपोज हे गला बेले वाटर वेपर हिसाब रिलीज कर दबा बोली करी स्टोमाटा के भीतर के ढुकी करी थिसे एंड स्टोमाटा बोली करी क्वेश्चन ऐसी जो sunken stomata is the characteristic features of this type of plant that is succulent बुझियला सेंता एनिमल्स मानकर केसरे जदी हमें देखमा केन एनिमल्स माने देखबार के मिलसन इचा करे मोस्टली देयर इज प्रेजेंस ऑफ camels माने देखबार के मिल lizards माने देखबार के मिलसन as well as किछटा snakes देखबार के मिलसन इ जगह रे ओके एंड इंडिया रो वन ऑफ द इंपोर्टेंट डिजर्ट केनटा थॉर इंडिया रो डिजर्ट जे देखमा दैट इज योर थॉर केना छै राजस्थान पे ओके इटा गला हमर काना दैट इज योर डिजर्ट इकोसिस्टम काना में बुझ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमेंट ऑन continental drift is that continental
कहा के क्वेश्चन में डिस्कस देखो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट रो माने हला दैट इज द स्लो मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ ओवर द टाइम जेतेले हम टाइम देखु डिफरेंट टाइम रे हमर अर्थक्वेक हमें फील करू काहेले जी हां हेसी अर्थक्वेक दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस राइट तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट रो माने हला the slow movement of the continents of the earth the slow movement of the continents continent माने का continents माने का महादेश है ना the slow movement of continents of earth over time is called continental drift it's called continental drift okay suppose धरिनियो this one that is our earth है ना मनकर अर्थ है अर्थ रो बाहर सरफेस केनटा लिथोस्फियर लिथोस्फियर काना है दैट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स ओके अर्थ रो लिथोस्फियर जतले देखमा दिस इज ए डिफरेंट रीजन रे डिवाइड है सेवरल प्लेट्स हिसाब से डिवाइड है कोई मैप नै बनाबर जस्ट ओवरऑली बुझाबर ले को ओके तो हमर काना होचे लिथोस्फियर दैट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स lithosphere is divided into several plates okay and these plates that are floating on the earth surface ये प्लेट्स माने फ्लोट करूछन कहार ऊपर फ्लोट करूछन अर्थ रो भीतर साइड के जदी हमें जिमा अर्थ रो भीतर साइड रे भीतर साइड ता काना ही करते से बहुत हॉट थिसी एंड मेल्ट हे करते एंड सॉफ्ट थी राइट ताकि कोइ समय मैग्मा बोली करी को भीतर साइड देखा लीटा ओके जेतला अर्थ रो भीतर साइड देखमा तार भितरे हमर काना होचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर मैग्मा प्रेजेंट भीतर साइड जेतला में जिमा सनो काना होचे मैग्मा ओके दैट इज योर melted region है and this one that is your liquid soft and liquid हे करते okay so lithosphere divided into several plates and these plates that are floating on this magma ऊपर में float करू धीरे धीरे float करू and they will take millions of years to from one place and the next is पूरा बहुत speed movement करू मैग्मा काने मेल्टेड से जगह बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स में अछन बट सब केन कंडीशन अछन मेल्टिंग कंडीशन तर तगली करी तरल कंडीशन रे अछन सॉफ्ट हे करी अछन लिक्विड फॉर्म राइट सो लिथोस्फीयर डिवाइड टू सेवरल प्लेट्स ई प्लेट्स मन को टेक्टोनिक प्लेट्स बोली करी भी कहा जाय तो रखि दो टेक्टोनिक प्लेट्स बोली करी कहा ओके एंड these plates are floating over the magma कहार ऊपर माने फुल फ्लोट करूछ मैग्मा ऊपर माने फ्लोट okay so they will took million of years to travel from one area to another area तो इटा कुटा कंटिनेंट हला मनकर इटा कंटिनेंट नंबर 1 इटा कंटिनेंट नंबर 2 इटा कंटिनेंट नंबर राइट ಈಗ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಕरूचे से सड़के जे जेनार के गला काडा करूछ मूव करूछ कहार ऊपर मूव करूछ मैग्मा ऊपर मूव करूछ एंड दैट मूवमेंट टुक्स मिलियंस ऑफ इयर्स ताके कहूछ हमें काना बोली के कंटिनेंटल राइट so so that the continents of earth are moving over millions
ऑफ ईयर्स ओके ताके कहू हमें कंटिनेंटल ड्रिफ्ट बोली करी ताके प्रूफ करबार लगे बहुत सारा कांसेप्ट आसी छे एंड वन ऑफ द कांसेप्ट जदी हमें देखमा गोटे एग्जांपल नै करी जिमा फॉर एग्जांपल हमें जदी नै करी गला कंटिनेंटल ड्रिफ्ट होचे बोली करी तर एग्जांपल जमे नमा सपोज हमें देखला साउथ अमेरिका और अफ्रीका बिलीव करा जैसे जे साउथ अमेरिका और अफ्रीका बहुत पाखा पाखे थिले आगो लागी लागी बिकॉज़ okay it is believed that the South America and Africa are close to each other earlier. Okay, how it is proved? Can this have proof kara gala? But now this America, South America and Africa, they are not close to each other. They are separated due to continental drift. But due to continental drift, but due to continental drift, the South America and Africa are separated. देखो इते के केन हिसाब में प्रूव करा गला जितले हमें साउथ अमेरिका के देखमा के इटा मनकर अर्थ ला अर्थ रे सपोज दिस वन दैट इज योर साउथ अमेरिका सपोज पूरा 100% मैं साउथ अमेरिका नहीं काटबा ओके तभी थिसी काम बोली करी कंफ्यूजन है सपोज दिस वन दैट इज योर साउथ अमेरिका समस्त पजल खेली दिमा पजल रे हमें काना करसु गुटे गुटे ऑब्जेक्ट के आ गुटे ऑब्जेक्ट रो संगे जॉइन करासु के कहार संगे मैच करू छे हमें जॉइन करासु है ना हिंता ई जगह गुटे पजल खेलमा हमें जदी देखमा अफ्रीका जदी हमें देखमा अफ्रीका रो स्ट्रक्चर जतेले देखा जाउछे अफ्रीका रो स्ट्रक्चर आउ साउथ अमेरिका रो स्ट्रक्चर पाखापाखी काना करछे गुटे जगह मैच करछे बुझियला तो एटा हला अफ्रीका हला ओके एंड इट हला साउथ अमेरिका हला साउथ अमेरिका आउ अफ्रीका इ माने काना करूछन मैच करूछन इ रीजन देखो इ रीजन रे माने काना करूछन मैच करूछन राइट तो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अफ्रीका गुटे साइड के पलै छे इ गुटे साइड के पलै छे सो दैट नाउ दे आर सेपरेटेड बट एबे इ माने एंता इ माने सेपरेट कंडीशन रे छन एबे ओ पाखे पाखे ना okay this one that is your Africa and this one that is your South America but आगो बिलीव करा जाउछि माने पाखे पाखे थि बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट रो लागि बोली कि इयाडे माने मूव करि राइट खाली पजल के सॉल्व कर देले तो नहीं आउ भी काना स्टडी करा गला हमर ई रीजन देखो ई रीजन रे जेन रॉक्स माने देखबार के मिलला आउ ई रीजन रे जेन रॉक्स माने देखबार के मिलला इतर दुई जन कर रीजन लागि मैं अलग अलग कलर कर ई रीजन रे जेन रॉक्स माने देखबार के मिलला एंड ई रीजन रे जेन रॉक्स माने देखबार के मिलला राइट तार रीजन रे और ई रीजन रे जेन रॉक्स माने देखबार ता दुही रॉक्स रो एज समान है तबन को जितेले एज के कैलकुलेट करा गला बयस केते अछि से रॉक्स मान कर जणा गला जे दुईटा समान इक्वल टाइम रो ऑन राइट दैट मींस गुटे टाइम रो उत्पत्ति हिचनि माने एंड से रॉक्स मान कर कैरेक्टरिस्टिक पाखा पाखी समान रहो बुझी पारलो तो दुई जन को रॉक्स रो एज काना रहउछ समान रहउछ राइट सो दैट इटा बिलीव करमा जे यस अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आगोरी माने बहुत पाखे पाखे थिले बट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दे सेपरेटेड तो माने काना हिचन सेपरेटेड
बुझीगला इटा के कहू हमें काम बोली करी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोली ओके तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड देखो इकोलॉजिकल पिरामिड हमें कहसु का इकोलॉजिकल पिरामिड रो माने है इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम और गोटे फूड चेन हमें जिते स्टडी कर तो फूड चेन रे जेन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल असन से ट्रॉफिक लेवल मान को ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करछु बाय गिविंग सम पिरामिडल स्ट्रक्चर ताके कहछु इकोलॉजिकल पिरामिड बोली व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स फर्स्ट लेट मी राइट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स नहीं के फर्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड रो माने इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज द graphical representation graphical representation of trophic levels of food chain of food chain फूड चेन मन को रिप्रेजेंट करबार लगी ग्राफिकली हमें केनता करी रिप्रेजेंट करूछु ताके कहसु हमें काम बोली करी दैट इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड बोली करी कहसु एंड इकोलॉजिकल पिरामिड कांसेप्ट आनी करी असले गोटे बायोलॉजिस्ट तकन हला चार्ल्स एल्टन ओके इन क्वेश्चन ऐसी द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड was given by Charles Alton. Charles Alton. Okay, Alton देले गोटे concept that is your ecological pyramid. Ecological pyramid कहूचे काना हमको जन फूड चेन रो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल अच्छे से ट्रॉफिक लेवल मान को हमें डिफरेंट वे रे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करबा ताके कहमा इकोलॉजिकल पिरामिड केतरा टाइप्स रो देखबार के मींस ब्रॉडली हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के तीनटा टाइप रे डिवाइड करसु केतरा टाइप रे डिवाइड करसु तीनटा टाइप रे डिवाइड करसु ओके द इकोलॉजिकल पिरामिड इज डिवाइड टू थ्री टाइप्स हमें जेतले देखमा देयर इज प्रेजेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड तीनटा टाइप रो इकोलॉजिकल पिरामिड अछि द फर्स्ट वन ओके गुटे हला पिरामिड ऑफ नंबर pyramid of number 2 number हला that is your pyramid of biomass देखो सब गुटे गुटे शॉर्ट नोट हे पारे एंड 3 नंबर हला pyramid of energy ओके गुटे हला pyramid of number pyramid of biomass pyramid of energy one by one हमें डिस्कशन करबा देखो फर्स्ट हला पिरामिड ऑफ नंबर कहा एक नंबर हला पिरामिड ऑफ नंबर जदि हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के नंबर हिसाब से रिप्रेजेंट करसु इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल रे केते नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अछन इन ए स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल हाउ मेनी रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ दैट ट्रॉफिक लेवल सेता के जदि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करछन ताके को हम काम बोली कि पिरामिड ऑफ नंबर बोली कि बुझियला कहा कि हमें पिरामिड ऑफ नंबर बोली कि हम जदि हमें रिप्रेजेंट करूछु if the trophic levels if the trophic levels are represented by their relative number
by the relative number, then it is called as pyramid of number. Pyramid of number. तो ताकि हमें कहमा pyramid of number बोलिकी, राइट. तो हमें pyramid of number के जेतेले रिप्रेजेंट करू छु, जनरली pyramid of number लोअर साइड रे रहसन केन माने दैट इज योर तले रहबा के दैट इज योर ऑटोट्रॉफ्स, तानु ऊपर के रहबा के दैट इज योर हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स थ्रू कार्निवोर्स. तो pyramid of number हमर पाखे दुटा टाइप अछि, टू टाइप्स रो pyramid of number अछि. गोटे हला upright pyramid and another one that is inverted pyramid. Inverted pyramid. Upright रे हमर काना होचे देखो, फॉर एग्जांपल upright टा फॉर एग्जांपल लेना, सपोज ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ओके, ग्रासलैंड इकोसिस्टम रो गोटे फूड चेन लेना, सपोज इ जगह रे ग्रासेस माने रहले, ग्रासेस माने रहले. तो ग्रासेस रो नंबर जतेले देखो हम बहुत अधिक है, बहुत सारा ग्रासेस माने अछि, बहुत सारा ग्रासेस माने अछि. तार परे ग्रास ऊपर के डिपेंड करसी, ग्रास ऊपर डिपेंड करसन ग्रास ऊपर माने, ग्रास ऊपर माने. ओके, तो ग्रास ऊपर समान को जी देखमा, समान को नंबर ग्रास नोट के कम है. ग्रास ऊपर के डिपेंड करसी, फ्रॉग डिपेंड करसी. तो देखमा जदी बेले फ्रॉग रो नंबर 8 के कम. फ्रॉग ऊपर के डिपेंड करसी, स्नेक माने डिपेंड करसन, तो स्नेक मान को नंबर फ्रॉग नो 8 के कम है. स्नेक ऊपर के डिपेंड करसी, सपोज हॉक हला कि ईगल हला, तो माने डिपेंड करसी. तो हमर गुटे ट्रॉपिक लेवल रु आ गुटे ट्रॉपिक लेवल निके जतला में जाउ छु, नंबर टा धीरे धीरे काना करते जाउ छे, डिक्रीज करते जाउ. नंबर टा काना करते जाउ छे, डिक्रीज करते जाउ, राइट. तो ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर हमर पिरामिड टा ट्रायंगुलर शेप रो आसु छे. इता के कहू हमें अपराइट पिरामिड. जदि ऊपर के हमर काना करते जाउ छे, डिक्रीज करते जाउ छे, पहले ताकि कहम हमें क्या पिरामिड, अपराइट पिरामिड बोली. बट उल्टा कंडीशन भी देखबार के मिलस. ओके, उल्टा कंडीशन भी देखबार के मिलस. जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्री इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम हमें जितने देखमा, ट्री इकोसिस्टम दैट इज ए पैरासाइटिक इकोसिस्टम बोली के भी कहै छै, मन रखि तो. ट्री इकोसिस्टम रे हमर काना होछ, सपोज गोटे देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेरी लार्ज साइज रो ट्री अछि, गुटे न ट्री अछि, राइट. बट से लार्ज साइज रो ट्री ऊपर के डिपेंड करू छे, बहुत सारा बार्स डिपेंड करू छन. नो बार्स रो नंबर अधिक है. ट्री रो नंबर केते, गुटे. ट्री रो नंबर केते है, सिंगल 1. बट बार्ड रो नंबर काना करला ऊपर के इंक्रीज करला, बार्ड रो नंबर ट्री गुटे अछि, बट बार्स रो नंबर काना करला इंक्रीज करला. एंड बार्स मानकर बॉडी जी देखमा, से मानकर बॉडी रे किछि पैरासाइट टिक्स माने प्रेजेंट. बार्स मानकर बॉडी रे काना माने प्रेजेंटेशन, टिक्स माने प्रेजेंट. जेन माने कि बार्स रो बॉडी रे पैरासाइटिक कंडीशन रे थिसन, तार बॉडी रो समाने न्यूट्रिशन गेन करू, राइट. तो टिक्स रो नंबर आउट के अधिक है. तो साइज के हमें काना करते जिमा, बढ़ाते जिमा, जेहेतु नंबर बढ़ते जाउ छे, त हम यार के ऊपर के बढ़ाते जिमा. इनो काना होतला, नंबर धीरे धीरे कमी कमी जाउतला, नंबर धीरे धीरे काना चल जाउतला, कमी कमी जाउतला. बोली पिरामिड के कहतला अपराइट पिरामिड. बट ई पिरामिड टा ऊपर के जितले देखमा, नंबर टा धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउ छे. तो पिरामिड टा केंदा दुसछि, उल्टी गला भलिया दिसु छे. तो देर इटा के कहू हमें काम बोली कि इन्वर्टेड पिरामिड बोली, बुझि पारल. तो पिरामिड ऑफ नंबर फिर इन्वर्टेड रे एग्जांपल दियो बेले हमें केन इकोसिस्टम रे एग्जांपल दमा, ट्री इकोसिस्टम रे एग्जांपल दमा, बुझियला. यदि अपराइट रो दियो बेले यू कैन गिव द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम दे पारमा, बुझियला. एटा गला हमर काना दैट इज योर पिरामिड ऑफ नंबर. दुई नंबर का, दुई नंबर हला पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास.
बायोमास माने काना दैट इज द लिविंग वेट वेट के बेस करके ड्राई वेट कहि परबा राइट जदि हम पिरामिड बनाउछु एंड if the pyramid is representing if the pyramid is representing the biomass or we can say that living weight of the organisms of trophic level, then it is called pyramid of biomass, called as pyramid of biomass. तो ताके को हम pyramid of biomass. ओके pyramid of biomass के भी हमें दुईटा कैटेगरी डिवाइड करि पारबा गोटे हला ऑपरेट आ गोटे हला इन्वर्टेड एटा के भी दुईटा कैटेगरी डिवाइड कर दो टू टाइप ओके गोटे हला upright one is your upright and another one that is your inverted okay ino question আছে inverted रो question माइंड के वन मार्क रो क्वेश्चन है भितर आसे बुझिला कि नहीं तमर अपराइट पिरामिड जे देखमा सपोज गोटे फॉरेस्ट इकोसिस्टम नला कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम नला ओके जति ग्रास अछि ग्रास रो हमें काना कला वेट नला जति ग्रास रो वेट नला पाखा पाखी माने कर लेना ग्रास मान कर वेट 1000 केजी पर हेक्टर होउछ केतो होउछ दैट इज योर 1000 केजी पर हेक्टर ओके 1000 केजी पर हेक्टर ग्रासेस मान कर ग्रास ऊपर के डिपेंड करूछ ग्रास ऊपर डिपेंड करूछ ग्रास ऊपर डिपेंड कला कि सपोज ग्रास ऊपर छाड़ हमें जदी ना आउट एग्जांपल दैट इज रेबिट रन ओके रेबिट रन ना ग्रास ऊपर मनकर डिपेंड कला रेबिट एंड रेबिट मनकर जदी बायोमास हमें कैलकुलेट करबा समनकर वेट होचे पाखा पाखी 100 केजी 100 केजी पर हेड ओके ग्रास ऊपर 8 के कमबा रेबिट रो कंपैरिजन राइट तापरे असला हमर के फॉक्स रेबिट ऊपर के डिपेंड करछि फॉक्स रो तार वेट जे देखमा हेक्टर रे गोटे हेक्टर रे फॉक्स केते अछन ओके रिलेटिव नंबर भी कम थिबा समनकर एज वेल एज समनकर जेतु नंबर कम अछि बोले समनकर वेट भी से जगह रे पर हेक्टर कम होबा दैट इज जो 10 केजी पर हेक्टर ओके तो एंता हिसाब हमर काना करते जाउछ डिक्रीज करते जाउछ तो दैट इटा के कहूछ हम काम करी राइट ओके एंड इतर परे के रहला टाइगर रहला तो गुटे हेक्टर रे गुटे टाइगर थिबा बोली भी तो माने नाही तो 10 केजी रो लेस देन नमा पर हेक्टर जदि हमें कंसीडर करमा तो लेस देन 10 केजी आसबा कि टाइगर रो गुटे हेक्टर रे गुटे नाही नाही था हजार हजार हेक्टर रे गुटे टाइगर थी बुझिला तो इता जे देखमा लेस देन 10 रहउछ 10 केजी पर हेक्टर जदि टाइगर डिपेंड कला फॉक्स तो इनो काना होचे धीरे धीरे बायोमास ता काना होचे कमी कमी जाउछ ताकि को हम काम बोली कि अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास बट इन्वर्टेड बायोमास रो पिरामिड ता इन्वर्टेड रहसी हर केस रे दैट इज इन केस ऑफ प्योर एक्वाटिक इकोसिस्टम केन मानकर केस रे रहसी एक्वाटिक इकोसिस्टम केस रे हमर पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड क्वेश्चन ऐसी in that type of ecosystem the pyramid of biomass is okay so example dama that is your aquatic ecosystem जदि हमें example रे नेला inverted रहबा ओके तले केन माने रहबे फाइटोप्लैंक्टन्स जेन माने पानी रे जेन aquatic plants माने किछटा प्रेजेंट दिस राइट algae किछटा algae प्रेजेंट वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट दिस तो इटा मन को क्वेश्चन में काम बोल फाइटोप्लैंक्टन
ओके एंड फाइटोप्लैंक्टन्स मनकर वेट जदी अब देखमा पर मीटर स्क्वायर दैट इज ओनली 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर केते आछे एटा 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर 4 ग्राम पर मीटर फाइटोप्लैंक्टन्स मनकर ऊपर फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोट छोट प्लांट जेंडर रहले ताकि कहला फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स मन को के डिपेंड करसन स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट टाइप रो एनिमल्स माने थिसन समन को कहू हमें जू प्लैंक्टन जू प्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स रो वेट देखमा दैट इज 8 ग्राम पर मीटर इमनकर वेट हला 8 ग्राम पर मीटर जू प्लैंक्टन्स के केन माने कहले स्मॉल फिशेस माने खाइले इधर ऊपर केन माने डिपेंडेंट ऑन स्मॉल फिशेस माने एंड स्मॉल फिशेस मनकर जदी वेट देखमा पर मीटर स्क्वायर दैट इज 12 ग्राम पर मीटर 12 ग्राम पर मीटर एंड स्मॉल फिशेस ऊपर केन माने डिपेंडेंट ऑन लार्ज फिशेस माने बिग फिशेस माने ओके एंड इमनकर वेट जदी देखमा दैट इज 15 ग्राम पर मीटर 15 ग्राम पर मीटर बुझियला एटा गला हमर काना दैट इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड रहउचे क्या इकोसिस्टम रे एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना हमर जेन छोट छोट प्लांट्स माने अछन पर मीटर स्क्वायर रे जतकी प्लांट्स माने थिबे मनकर वेट नमा और लार्ज फिश रो वेट नमा काटा अधिक है ऑब्वियसली लार्ज फिश मनकर वेट अधिक आबा से जगह रे पर मीटर स्क्वायर जदी देखमा बुझियला कि नहीं तो सही हिसाब में जदी जिमा तो हमर काना हो ऊपर के साइज ता बड़ी बड़ी जाउ तो एटा कहला इन्वर्टेड उल्टी गला पिरामिड ता सीधा अछि तो सदा के हमें कहना कहना दैट इज योर अपराइट पिरामिड तो नेक्स्ट हमर काना दैट इज योर 3 नंबर टाइप रो इकोलॉजिकल पिरामिड जहा के कहउछु हमें काम बोली कि दैट इज योर पिरामिड ऑफ 3 नंबर ता हला पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर मान सॉरी पिरामिड ऑफ एनर्जी नंबर तो सला ना पिरामिड ऑफ एनर्जी ओके पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें कहा के कहउछु जदी हमर एनर्जी इन ईच टॉपिक लेवल काना होछ से रिप्रेजेंट करूछु जदी ग्राफिकली राइट so it represent the energy in each topic level it represents the energy represent the energy in each trophic level right देखो पहला दुटा पिरामिड हमें जितने देखुतला गोटे अपराइट आ गोटे इन्वर्टेड देखुतला बट ऑलवेज द पिरामिड ऑफ एनर्जी right there is no pyramid of energy which will be your inverted and the किसी पिरामिड ना नो जेंटा की सब बेले इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी होते दैट इज योर upright always always the pyramid of energy is upright सब बोले upright है because why it is upright because always the energy transfer from one trophic level to another trophic level will decrease गोटे ट्रॉपिक लेवल रो एनर्जी तेले गोटे ट्रॉपिक लेवल रो आ गोटे ट्रॉपिक लेवल के जाउछ ओनली 10% जाउछ राइट सो दैट गोटे ट्रॉपिक लेवल रो आ गोटे ट्रॉपिक लेवल लेके एनर्जी गला बेले ऑलवेज एनर्जी डिक्रीज करते जाउछ सो दैट ऑलवेज एनर्जी जेहेतु डिक्रीज करते जाउछ सब बेले से केना रहबा अपराइट रहबा ओके तो हमर सबुरु अधिक एनर्जी कहार पाखे रहउछ ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स रे जदी हमें 100% एनर्जी नेला राइट 10% केन के जिबा प्राइमरी कंज्यूमर काहे के कहला हार्बिवोर्स मान को कहला 10% गला से तानी के इतर 10% केन के जिबा सेकेंडरी कंज्यूमर ने के जिबा माने प्राइमरी कार्निवोर कहि परमा ताके सेकेंडरी कंज्यूमर ने के गला 1% टर्शियरी कंज्यूमर ने के गला केते परसेंट टर्शियरी कंज्यूमर ने के गला 1% ऑफ 10% 1% तो धीरे धीरे हमर एनर्जी काना करते जाउ छे डिक्रीज कर
So that always pyramid of energy, that is your upright pyramid question is. Okay, pond ecosystem re question is pond ecosystem re pyramid of biomass will be this. Pyramid of biomass ta kana inverted. Pond ecosystem kahar under है भाई aquatic ecosystem under है आसबा मैं तो aquatic पढ़ी ना pond ecosystem तो नहीं पढ़ी थी अंदा नहीं भाबना pond ecosystem kahar under है आसबा aquatic ecosystem right इटा गला हमर क्वेश्चन दैट इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड्स रो टाइप्स एंड सबु के लेके देला हमरे सबु थरे गुटे गुटे शॉर्ट नोट आसबार चांसेस ओके नेक्स्ट असला व्हाट इज नाटालिटी एंड व्हाट इज मोर्टालिटी नाटालिटी एंड मोर्टालिटी कहा के देखो नाटालिटी नाटालिटी रो माने हला बर्थ रेट नाटालिटी रो माने हला बर्थ रेट एंड मोर्टालिटी रो माने हला डेथ रेट ओके बर्थ रेट माने कना कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रो प्रोडक्शन होचे ड्यू टू बर्थ सो दैट से जगह रो पॉपुलेशन काना करूचे इंक्रीज करूचे ताकि क्वेश्चन में काम करी नाटालिटी बोली करी कहूछ ओके इट इज द रेट ऑफ बर्थ और इट इज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और बर्थ पर टाइम काना कहमा नाटालिटी रे हमें काना लिखमा नाटालिटी रे लिखमा जे इट इज द rate of reproduction or birth per unit time गोटे पर्टिकुलर टाइम रे कितने रेट रे रिप्रोडक्शन होचे जते रेट रे रिप्रोडक्शन हबा सेतकी रेट रे बर्थ हबा राइट रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बर्थ so that it कहि पर मा it is the rate of reproduction or the rate of birth for unit time गोटे पर्टिकुलर टाइम रे केते बढ़ुछ ताके कमन नाटालिटी बोली करी राइट मोर्टालिटी कहा के कहमा it is the rate of death per unit time per unit time रे किते रेट रे किन रेट रे अधिका स्पीड रे डेथ होचे ना स्लो रे डेथ होचे किते डिक्रीज करूचे से जगह पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ ताके कहू हम काम करी मोर्टालिटी नाटालिटी जनरली काना करूचे गोटे जगह पॉपुलेशन डेंसिटी के काना करबा इंक्रीज करबा ओके इट गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द पॉपुलेशन so it increase the population population size के increase करावा के that is your natality but ये काना करबा it will decrease the ये कहा के decrease करबा population size के decrease करबा decrease the population size के decrease करबा that is your mortality और death rate बुझिएला तो देखो केनसी भी जागर रे हमें जदी देखला जे नाटालिटी आउ मोर्टालिटी जदी समान रहउछ केनसी भी पॉपुलेशन रे नाटालिटी मोर्टालिटी समान जदी रहउछ बेले से पॉपुलेशन के कहमा स्टेबल पॉपुलेशन if in a population गोटे पॉपुलेशन हमें जितेले देखमा नाटालिटी इज इक्वल टू मोर्टालिटी जदी हला नाटालिटी और मोर्टालिटी जदी समान रहला फिर से पॉपुलेशन के कहमा स्टेबल पॉपुलेशन बुझिएला बट जदी नाटालिटी जदी बढ़ी गला नाटालिटी ता जदी मोर देन मोर्टालिटी जतकी जन्म होचन तारनो अधिका जदी मरु बेले ताके कहमा जतकी जन्म होचन तारनो कम मरुचन बेले सेता के कहमा में काम बोली करे दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बट उल्टिया जदी हला नाटालिटी कमी गला राइट एंड मोर्टालिटी बढ़ी गला जतकी जन्म होचन तारनो अधिका जदी मरुचन रेट रहला बेले ताके कहमा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्वेश्चन ऐसे ही हला
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन दुईटा समान रहले स्टेबल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी रहबा स्टेबल इक्री रहबा जह चिंता ना ओके आ गोटे टर्म एक्चुअली दैट इज रिलेटेड टू दिस नाटालिटी मोर्टालिटी जहा के क्वेश्चन में वाइटल इंडेक्स बोली करी आ गोटे टर्म असला काना दैट इज योर वाइटल इंडेक्स वाइटल इंडेक्स वाइटल इंडेक्स माने काना वाइटल इंडेक्स रो माने हला जे इट इज द परसेंटेज ऑफ रेशियो बिटवीन डेथ रेट एंड your sorry that is the death your natality and mortality percentage of ratio between the natality and mortality it is the percentage of ratio between natality and mortality okay suppose natality के मिनली बी बार्थ होचे मोर्टालिटी के नेली डेथ होचे डी नेली एंड वाइटल इंडेक्स आई राइट तो हमर आई इज इक्वल टू हेबा काना नाटालिटी मोर्टालिटी रो रेशियो बाहर करामा बी डिवाइडेड बाय डी इनटू परसेंटेज करवार छे तो इनटू 100 कला पहले इते के कहमा से जगह रो वाइटल इंडेक्स ऑफ द पॉपुलेशन रो वाइटल इंडेक्स केते हेबा बर्थ रेट डिवाइडेड बाय डेथ रेट इनटू 100 करमा ताके कहमा में काम लिखि वाइटल इंडेक्स बोली कि कहमा 1 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर ओके तो आज लगे हमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने डिस्कशन कला ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर okay I think you all may enjoy this session if any doubt you can write to us our chat box is open for all of you that is 24/7 in our nucleotide application okay so thank you please share this application with the all of your intimates as well as your all of your brother and sister everyone should get benefited from our nucleotide okay and again we koi raku this is the first educational app of the western odisha so that samaste itar babot re janbar ache jetkiru jetki haba share karo samastonku right samaste itar benefit uthe paron because amar jen courses mane roche tar price point of view jodi jima bahut कम price रे ame bahut content gain kari paru okay thank you